So today we have started second unit of cyber law. Second unit is e-commerce. Okay. So how cyber law protect e-commerce? How cyber law secured e-commerce? What is the process? How they maintain the privacy? What kind of guidelines they provide? You know? So that things we studied in unit 2 of cyber. Content which we have seen here, contracting via the internet. Okay. Nowadays we have seen, not nowadays, when computers started, that from same time they send us some kind of notification, you have to do this, you have to do this, step by step. They always guide us the process, right? So cyber law also change their some kind of feedback we have given, that that kind of process you need to change. So they applying and doing some kind of changes of each and every manner. Means जैसे जैसे मुझे लगता है कि एप्लीकेशन में ये चेंजेस होना चाहिए, तो they will do it. So intellectual property in a वेबसाइट में intellectual property को कैसे सिक्योर करना है, data privacy and marketing, you know, n number of ads when we have start internet. So n number of ad comes in one by one. When you start YouTube, they also started some kind of ads. When you are in Facebook, they are also we have find some kind of n number. Means when you started any kind, even in your mobile, when you started or when you start the mobile, n number of ad and functions and started there. So how they secured, how they maintain their privacy and all, how they maintain data, and how not only maintain but save and secure the data. Every month or every some kind of some couple of days of we have get a notification of Facebook. Means I have get a notification of Facebook, okay, secure your Facebook, change this data. Do you want to change this data? Are you aware about this? So that kind of notification, if no, then you have to go this, you have to click this button, you have to click this option, and you choose that kind of. So n number of things we have, but we need to learn it. What we do, we ignore that kind of notifications, but it's good for us because awareness, they just want us to keep awareness in ourselves, to improve our knowledge. So always, whatever the notifications comes in your mobile, email, so just read it. If you feel like that, yeah, it is important, then you keep it. Otherwise you delete it or ignore it, whatever, but at least you read it. What is the notification comes every day? IT department send kind of notifications, C department, ICWA department, CS department, even internet, even your email, in you are join any kind of programs or education program, academic. So n number of notification comes. Got it? But all time we ignore it. But don't ignore, you just read. Even news alert. Okay, so every day we get a notifications regarding news in our mobile, that it is happened. You just read it and delete it, read it, delete, read it, but at least read it, because to improve the awareness and the things kept in your mind. Wait a minute. Yeah, sorry. And the things keeps in your mind, that that kind of news I read or heard it. Okay, so that is advertising guideline. We have seen a number of advertising guidelines stepping in our mobile. Okay, then your user generated content, liability and defense, and number of selling goods and services, then consumer terms, what do they need to contain, and number of we have seen it, and number of
Please read this carefully. Everyone. It's a case study. Done. Read. So what it is actually, Bill is a third year computer science student with an obsession with the boy band One Dimension. Okay, he designs and step up a website where One Dimension fans can share views, photos, and about the band and their own. Maybe there is some connection issue. Let's start. So Bill is a third year computer science student with an obsession with the boy band One Dimension. So he designed and set up a website where One Dimension fans can share views, photos, and gossip about the band, as well as their own video tributes. So there is a facility for fans to set up their own profile on the site and message. Bill also decides to some of his setup cost of the Bill site by selling One Dimension merchandise. And as the site grown, Bill would like to further increase his revenue by selling advertising on the site. Anyone know the name of person? Yes, please. So ये बिल था, उसने एक जैसे हमारा गूगल पे हम लोग जैसे फेसबुक ये वो वैसे बनाया, लोग उसे यूज कर सके, और उस ग्रुप में उसने ऐड का भी प्रोसेस दे दिया ताकि लोग उसे देख सके, है ना? You read it carefully and tell me what is the case study. Yes, anyone? What do you understand after reading the case study? Please come on, speak up. Speak up, anyone? No one knows about it? Yes? Mayura, Jayashri, Omkar, what do you understand? Mayuri Joshi, Shubhada, Rutuja, Chaitanya, Dipali Suryavati, Rupali, Pratiksha. What happened actually in this case study? Come on.
What do you understand actually in this case study? Yes or no? Shubhada, please speak up. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So tell me, what is the study actually? Will just a computer science student, okay, with an obsession with the boy band One Dimension, right? Next, he designed and set up a website. What he designed? Website. What kind of? Where One Dimension fans can share views, photos, and gossips, right? Then about the band. So boy only the gossip, photos and all. जैसे आपका ग्रुप होता है एकेडमिक का तो आप उसमें वही डालते हो, वैसे उसने भी वो बनाया एज वेल एज देयर ओन वीडियो ट्रिब्यूट्स. वो अपने ओन वीडियोस भी उसमें शेयर कर रहे ऐसा उन्होंने एक वेबसाइट बनाया. देन मीन्स उसके दिमाग में था कि ऐसा ऑब्सेशन मीन्स उसके दिमाग में था ऐसा कुछ करना है, पैशन भी बोल सकते हैं आप उसे. ही इज अ पैशनेट बॉय. सो उससे लगा कि उसने, और उसने बनाया भी. ओके, सो देन मतलब ऐसा कहते हैं ना कि नहीं करना ही है. सो दैट इज देयर इज अ फैसिलिटी फॉर फैंस टू सेट अप देयर ओन प्रोफाइल. उसने जैसे अपने गूगल का ऐसी फैसिलिटी रखी थी कि ताकि सारे बॉयज, सारे पीपल अपना ओन प्रोफाइल भी वो साइट पे रह सके एंड प्राइवेटली मैसेज ईच अदर. और प्राइवेटली ईच अदर हम सबको मैसेज जैसे हमारे व्हाट्सएप का होता है वैसे ही सेम समझ लीजिए. विल ऑल्सो डिसाइड टू रिकप सम ऑफ his setup cost for the site by selling one dimension merchandise. है ना? उसने वो सोचा कि उसका कॉस्ट निकालने के लिए वो ऐसा कुछ भी करे ताकि वो उसको क्या कर सके, उसका इम्पोर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस उसका रह सके, उसमें उसको इम्पोर्टेंस मिल सके इसमें, right? So Bill also decide to recoup some of his setup cost of the site by selling one dimension merchandise. So as site grows, Bill further increase his revenue by selling advertised on the site. Okay, तो उसने क्या किया कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने फिर स्लोली एडवर्टाइज भी उस पर शेयर करना चालू किया ताकि वो एडवर्टाइज के थ्रू उसने अपना जो बिजनेस है, मतलब ई कॉमर्स बोलो या मीन्स कितनी अच्छी आइडिया है ना कि आज की डेट में भी अगर अपना आपको कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, यू हैव अ टैलेंटेड बिकॉज यू नो कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर वगैरह तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं. टेक्निकल चीज में मनी भी बहुत, लेकिन को पसंद आना चाहिए. इसने भी क्या किया कि n नंबर ऑफ ग्रुप इसके पास था. इसने एक ऐसा जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है वैसे उसने बॉय बैंड का एक ग्रुप बनाया और उसमें भी उन सभी लोगों को, उसके जो फ्रेंड सर्कल्स है उसको ऐड किया और उनको भी वो फैसिलिटी दी ताकि वो भी अपना प्रोफाइल शेयर कर सके, है ना, ताकि वो भी अपनी डिटेल्स उसमें शेयर कर सके और ये भी उसमें. तो ऐसा जब उसका n नंबर ऑफ ग्रुप हो गया तो उसी ने उसी अपने ब्रांड से बनाया था, उसी में से कैसे पैसे अर्न करना है तो उसने उस पे से एडवर्टाइजमेंट सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, है ना. व्यूज मिलते हैं अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे नंबर ऑफ एडवर्टाइज हम ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसमें से मनी अर्न कर सकते हैं नेटवर्क के जरिए. सो नाउअडेज हमने बहुत सुना है कि इतने लाइक्स मिले, उतने ये मिले तो हमें ये सब मिलता है. तो सेम उसका भी था, तो उसका एक एडवर्टाइज हो गया, वो अर्न करने लगा एंड उसका प्रमोशन भी हो गया, राइट. तो ये सारी चीजें भी हम लोग वेबसाइट पे, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, उसका आउटपुट भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो आप पसंद करेंगे उतने ज्यादा आप क्या होंगे, मशहूर होंगे, है ना. तो वो साइट मतलब ऐसे उसका मिसयूज नहीं है, वो साइट है मतलब उसमें आप प्रमोशन मिल रहा है आपको, you don't spend any money for that. So that is the good boy who
make this boy band dimension, right? So now next, कॉन्ट्रैक्टिंग ओवर द इंटरनेट द बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन. तो इसमें क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस है ना. आप ऑफर करते हो किसी को, जैसे आप कि भाई अगर तुझे लेना है, कि जैसे आप में से कोई अगर बच्चा कुछ बुक्स परचेस कर रहा है या कुछ बुक का एडवर्टाइज कर रहा है या कोई ड्रेस डिजाइन कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में डालते हैं यार आपको पसंद है कि ये चीज पसंद हो तो वो ऑफर करेगा, अदरवाइज नहीं. एक्सेप्टेंस लगता है ना, कि यस आई वुड लाइक इट सो आई वांट टू बाय इट. देन कंसिडरेशंस भी होता है उसमें. ये सब अपने चीजें पढ़ी है लॉ में, आपने पढ़ी होंगी बिजनेस एथिक्स में वगैरह. सो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस. सो आपका इंटेंशन ये हो रहा है कि लीगल ही होना चाहिए, राइट? मिसयूज नहीं होना है. द वेबसाइट प्रोवाइडर विल वांट टू स्ट्रक्चर इट साइट एज एन इन्विटेशन टू ट्रीट नॉट कैपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड इंश्योर द यूजर इन द पार्टी मेकिंग एन ऑफर. सो ऑलवेज जब भी आप कुछ क्रिएट करते हो तो लीगल वे से आपको ध्यान में रखना है. बिजनेस एथिक्स जो है वो आपको क्या करना है, मेंटेन करना है. नेक्स्ट, so signing a contract via the internet, what is the process? So admissibility of electronic signature, yesterday we have seen, means last minute we have seen to create digital signature. So how we use it, admissibility of electronic signatures, here is Electronic Communications Act 2000. Excuse me. Digital signatures, scanned manuscript signatures, typing one's name, original name, whatever, and clicking on a website button are in our view. All method of signatures which are generally capable of satisfying a statutory signature requirement, we state that on the basis that it is function rather than from which is a determinative of the validity of a signature. So this method are all capable of satisfying the principal function, namely demonstrating and authenticating intention, है ना. ये ऐसा सिग्नेचर आता है. और वो ग्रीन सिग्नेचर, ये वाला बहुत बार होता है. जैसे लास्ट टाइम मैंने देखा कि जो भी बच्चे अभी अपने एडमिशन ले रहे थे, तो एन नंबर ऑफ पीपल सेंड मी द डॉक्यूमेंट्स बट विदाउट सिग्नेचर. So I request them, please send your signature electronic. अभी तो सारी चीजें आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल रही है, कास्ट सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक मिल रहा है आपको, वैलिडिटी आपको इलेक्ट्रॉनिक, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ एवरीथिंग यू विल गेट इलेक्ट्रॉनिक. बट you should is there or not, है ना. वो आता है ग्रीन सिग्नेचर, हम लोग देखते हैं वेरिफिकेशन. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउअडेज. अगर वो है तो आपका डॉक्यूमेंट वैलिड है, अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है ना. उसका भी फॉर्मेट होता है. वो फॉर्मेट अगर आपके पीसी में है, आपको अगर मेल आता है और वो फॉर्मेट अगर आपके पीसी में है तो आपको फट से वो मिल जाएगा. दैट इज द थिंग. ओके, सो contracting over the internet information requirement, what it is actually, transactional and non-transactional websites, and number of websites are there. So bill has to ensure the makes available to visitors. bills क्या करता था, visitors को ensure करके मिलता था. ओके, उनके साथ कांटेक्ट करता था, उनसे ensure करता था in a form and manner which is easily, directly and permanently accessible, right? So name of service provider है ना, बॉय बैंड फैंस लिमिटेड, राइट. सो उसने क्या दिया था, नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, वो अपना खुद का नाम लिखता था, बॉय बैंड फैंस लिमिटेड, राइट. सो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड नंबर एंड रजिस्टर्ड एड्रेस, एवरीथिंग इज देयर. जैसे आप लोग आज की डेट में, हम लोग अगर कोई भी वेबसाइट आपको अगर ये कर रही है, हैक कर रही है, आपको बार बार नोटिस भेज रही है, डू इट. सो आप सबसे पहले क्या करते हो, उस पर्सन का वेबसाइट है कि नहीं, सबसे पहले देखते हो उसने अपनी वेबसाइट में सारी चीजें डाली है कि नहीं, कब उसका वो सारी चीजें. हम अगर उसका वेबसाइट नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, उसका एड्रेस अगर नहीं है, तो हम लोग वहां पे ये नहीं करते. तो ये सारी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए. विदाउट ये लीगल काम पहले फर्स्ट वी हैव टू चेक इट, द पर्सन्स प्रोफाइल,
ओके, फेसबुक पे चेक करेंगे, इंस्टा पे चेक करेंगे, लिंक्डइन पे चेक करेंगे, एवरीवेयर वी हैव टू चेक हिम। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि यस दिस वाज। कोई भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, बिग कंपनी है, तो फर्स्ट यू हैव टू चेक द वेबसाइट, राइट, क्या है टर्नओवर क्या है। सो दैट इज द वे, true way to check each and everything, because nowadays every source is available. And after that you should go further process, whatever, right? So geographical address is there whereby bond fans limited is established। उसका जियोग्राफिकल एड्रेस दिखता है, जैसे वेब अपने गूगल पे भी दिखता है ना, जैसे आपको अपने कॉलेज का सर्च करना है एमएस, तो वहां पे जियोग्राफिकल पूरा दिखाता है, उसका लोकेशन कहाँ का है, वो पूरा एवरीथिंग, तो वो भी उसमें दिखना चाहिए। वैट नंबर अभी तो ठीक है, जीएसटी सीजीएसटी नंबर वो भी दिखना चाहिए। सो इफ रेफरिंग टू प्राइस इंडिकेट clearly and unambiguously and state whether inclusive of tax and delivery cost, everything जो रूल्स मतलब जो एथिक्स है ना बिजनेस के, वो भी उसमें होने चाहिए। जैसे n number of courses, n number of things we have buy and sell every day, so the conditions are limited, है ना। So it's a free, or it's a free of cost, or you need to pay some kind of some amount, everything should be mentioned in clearly. Got it? Now contracting over the internet transactional website, what it is prior to order. So in a clear, comprehensible and अनएम्बिगियस मैनर, है ना। बहुत बार होता है कि क्लियर नहीं होता है, रिटर्न में लिखा नहीं रहता है, बैंक अकाउंट नंबर नहीं रहता है, फोन पे या कोई नंबर कुछ नंबर और रहता है और हम लोग लगाते हैं तो वो जाता नहीं है, किसी और का एड्रेस आता है ना। तो नो, एम्बिग्यूटी नहीं चाहिए उसमें, क्लियर चाहिए, एकदम कॉम्प्रिहेंसिबल, ट्रांसपेरेंट जिसे हम बोलते हैं। सो व्हाट टेक्निकल are required to conclude the contract? क्रम ट्रायल, है ना, क्रम्बलिंग ट्रायल्स होते हैं, करके देखिए उसमें। सो विल कंक्लूड इट कॉन्ट्रैक्ट टू फील्ड एंड एक्सेसिबल, है ना। जैसे अगर हम चेक करते हैं उसका है कि नहीं, तो वो एक्सेसिबल होना चाहिए, इजीली एक्सेस मिलना चाहिए। हाउ कंज्यूमर कैन आइडेंटिफाई एंड करेक्ट इनपुट एरर प्रायर टू प्लेसिंग ऑर्डर, ताकि कस्टमर प्रायर, तो वो उसका, जैसे अमेजोन का से आप अगर कुछ बुक करते हैं, मान्या से अगर आप कुछ बुक करते हैं, तो वहां पे उनका फॉर्म आ जाता है ना, यू सिलेक्ट द प्रोडक्ट। और इंटरनेट का ये हम सोच रहे हैं अगर ई कॉमर्स का, तो हम जब प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, देन दे आस्क योर नेम एंड योर एड्रेस। अगर आप बार बार एक उसी अमेजोन से परचेस कर रहे हैं, तो उसको कस्टमर पता हो जाता है, वो बार बार आपको एड्रेस नहीं पूछता, वो पूछता है कि ओके यू आर सिलेक्ट योर प्रोडक्ट, ओके check colors and whatever the things, and after that you just submit, buy the product, do the payment, and after 3 to 4 days the product will be received. Got it? So how consumer can identify and correct input error prior to placing order? And उसमें conditions भी दी होती है कि if you don't want to like this product, अगर आपको पसंद नहीं आया है, तो you should replace it within a 24 hours, within a 2 days, and they will come and they will accept it, right? So NB, failure to provide an appropriate, effective and accessible means to do this means a consumer can rescind their contract, है ना। अगर उसने ऐसा नहीं किया, फेल्यूर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, फिनिश्ड, है ना। सो दैट इज द थिंग। लैंग्वेज ऑफर फॉर कॉन्ट्रैक्ट, आप कौन से लैंग्वेज ऑफर कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, दैट इज अ गुड। टर्म्स एंड कंडीशन, यूजर्स मस्ट बी एबल टू स्टोर एंड रिड्यूस देम सेंड बाय ईमेल, राइट। एनी कोड ऑफ कंडक्ट विच विल सब्सक्राइब्स, राइट। सो ये सारी कंडीशंस है, वो आजकल डिजिटाइजेशन में देखने को मिलती है ये सारी कंडीशंस। तो पहले तो सिलेक्ट करिए कि कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका पूरा बायोडाटा आप देखिए, वो कहाँ
है, प्रोडक्ट कैसा है, क्वालिटी कैसी है, उसके रिव्यूअर्स के फीडबैक देखिए, एन नंबर ऑफ फीडबैक्स इज देयर, है ना. सो वो सब चेक करने के बाद ही आप उसे लीजिए. Now after the order has been submitted, what happened? Bill must acknowledge the receipt of an offer without undue delay and by electronic means, है ना. जैसे सबमिट हो जाता था तो बिल क्या करता था, जैसे हमें भी नोटिफिकेशंस आ जाते हैं ना अभी कि yes your product is successfully delivered within 2 days and you will get it within ऐसा मैसेज, तो सेम वो भी करता था. So take care, this acknowledgement of an offer is not acceptance. This can be done later. It's an offer, not an acceptance. So everything should go properly. If you are starting your digital business, so this thing you should be followed. You need to follow. Yes. Next. Sales of goods, supply of services. क्या है इसमें? So e-commerce तो बहुत easy है, वो आपको अच्छे से समझ. फर्स्ट चैप्टर जो था वो था थोड़ा डिफिकल्ट था. सो ई कॉमर्स तो हम लोग सभी कर रहे हैं अभी, सभी लोग डिजिटल, सभी लोग अमेज़न और ये सब यूज कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग. लेकिन फिर भी मैंने देखा है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं जब मार्केट में जाती हूँ तो मुझे वहां पे बहुत क्राउड दिखता है. मतलब पीपल ऑनलाइन तो बाइंग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ मार्केट में भी बहुत क्राउड रहता है. हाँ. सो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिस्टेंस सेलिंग regulations 2000, the electronic commerce regulation 2002, and the consumer right directives is 2011. तो ये 2002 में आया, 2011 ऐसे तीनों एक्ट, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट था वो 2000 में आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक्ट 2002 में आया, एंड कंज्यूमर राइट डायरेक्टिव ये 2011 में आया, बहुत लेट आया. Now the information requirement, what do you need to provide and where? What do you need to provide and where do you need? So delivery within 30 days, right of return, cancel within 7 working days, receipt. मैंने अभी बताया. Now one dimension music and videos are currently classified as a service but will be classified as a digital content once CRD implemented in 2014. So current service cancellations right. Current service है cancellations of right. Got it? And model withdrawal from feedback form. And number of things are, जब अगर आप होम डिलीवरी है तो आप उसमें भी फोन पे, कैश पे, गूगल पे करते हो, they will get a feedback form and ask you how was the service, please give your feedback form. So a number of changes are doing this time also. Got it? Now consumer terms, how are they different? Everyone say the consumer is a god, right? So how are they different? The unfair terms in consumer contract regulation 1999. What? It's a consumer protection. अगर कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट की कंप्लेंट कर देता है तो कंज्यूमर कोर्ट उसका वेरिफिकेशन करता है, and after that they will decide कि your product good or not. It's a depend on consumer. So implied terms under Sales of Goods Act 1979, Supply of Goods and Services Act 1982, Sale and Supply of Goods to Consumer Regulations 2002. Now, consumer term must be fair, reasonable, written in plain English. Unfair terms will be unforeseeable, right? Unfair terms will be unforeseeable and ambiguous drafting will be constructed in favor of consumer. Got it? Unambiguous मतलब एकदम क्लियर होनी चाहिए सारी इंफॉर्मेशन, ताकि इजीली कोई भी उसमें इन्वेस्ट कर सके या कोई भी वो परचेस कर सके. So that is the consumer terms. How are they different? कंज्यूमर के हिसाब से ही चलना होगा आपको अगर आपका प्रोडक्ट आपको सेल करना है तो. Now consumer terms breaches, कैसे ब्रीच होती है कंज्यूमर की टर्म्स? So the consumer protection form unfair trading
Regulations 2008. So promotional material which appears to be editorial or user generated content and which does not make clear that it is a promotional is an automatically unfair practice under CPUT regs. उसके अंडर में आएगा तो ही वो होगा, अदरवाइज नहीं. प्रमोशन करना है आपकी, जैसे हम लोग देखते हैं ना, एन नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज आर प्रमोशनल, देयर मूवीज एंड एडवर्टाइजमेंट्स एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स. सो यू हैव टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, देन you should apply these things. So enforced by OFT and trading standard is that OFT and trading standard have the power to issue an uncapped fine or can bring criminal charges. Whatever, if they feel like that you are not doing well with them, so they have right to file complaint, suit complaint against you, and criminal, they charge whatever the charges, the criminal charges. Now, what is law of tort? So law of tort demands that in certain circumstances we are answerable for our action. Otherwise, negligence, trespass, interference, defamation, misstatement, product liability, etc., etc. लॉ ऑफ टॉर्ट होता है ना, जिससे आपको बोला गया है ये काम करना है लेकिन आप वो नहीं भलता ही कर रहे हो, उनको मिसगाइड कर रहे हो. सो यू डोंट डू दिस. You need to answer, you need to just communicate with them. If you do negligence, if you do trespass, if you do interference, defamation, misstatement, product liability, etc., etc., then consumer will not entertain. So tort of negligence, what will offer via his website various one dimensions related files such as the screensaver and a video that registered users of the site can download for free. Security, okay? So he doesn't use antivirus program to check the files. The file infect his users computers with a virus. Okay, after that, so bill website contain no disclaimers or executions of liability for damage or loss caused by malicious code, viruses, worms, etc. So what would his users need to prove to sue him for negligence? Duty of care, breach of duty, and breach of duty cause damage. ओके उसने तो बॉय बैंड का प्रोडक्ट बनाया, एवरीथिंग किया, बट आफ्टर जब उसने वो सेल करना चालू किया, वीडियोस बना के ना चालू किया, तो वो एंटीवायरस वगैरह कुछ भी नहीं यूज करता था, तो कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन बोलो या उसका क्लैरिटी उसमें नहीं आता था, तो इसलिए वो निग्लिजेंस में चला गया. और ड्यूटी ऑफ केयर और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया था जो था उसका, वो उसने क्या किया, ब्रीच किया. ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कॉज डैमेज, है ना. मतलब ऐसे हम लोग बहुत देखते हैं ऐड जो आते हैं कि ये ले लो वो ले लो, हम लोग ले भी लेते हैं जब हम मतलब हमें वो, तो उसका क्वालिटी इतना लो होता है कि ऐसा लगता है बाप रे इसके हमने 2000 रुपए दिए, इससे अच्छा मार्केट में जाके लेते थे, है ना. तो ऐसे भी बहुत सारे, मतलब आपको ये यूज करने वाली या फिर आपको मिसगाइड करने वाली एन नंबर ऑफ एजेंसीज या एन नंबर ऑफ थिंग्स अभी इसमें डिजिटाइजेशन में मिलती है, जो आपको बोलती है कि ये अच्छा है. दिखाने के लिए हम जब उसका वीडियोस देखते हैं तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी दिखती है हमें, है ना, ले लेनी चाहिए, इतना ऐड दिखते हैं उसका, इतने लिया उसको मिला, लेकिन उसमें एक डैमेज पीस तो आता ही है, रहता ही है. पता चला जब आप ओपन करते हैं अरे ये तो डैमेज निकला, और फिर वो इग्नोर कर देते हैं या फिर लेते नहीं. अमेजोन का मुझे पता है, अमेजोन वाला अगर डैमेज पीस निकला है तो तुरंत वो रिप्लेस करके देता है. बनने वाला भी अगर डैमेज निकला तो रिप्लेस करके देता है. ठीक है, तो ऐसे कुछ ही लोग हैं जो ट्रूली बेस पे क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं. अदर्स दे आर इग्नोर द थिंग्स, they just doing for their promotion, for their selling product. Defamation means what? The user of Bill's website post a statement on the public message board stating that lead
singer of One Dimension, Barry Samuels, is having an affair with Taylor Sligish. Barry is married to Caroline Smacks. Bill doesn't moderate his forums and had no idea the post was there. The post gets thousands of hits and Barry's smelly lawyers get in touch with Bill to ask him to remove the post. Got it? तो ऐसे आप रिव्यूज देखते हैं ना, बहुत सारे रिव्यूज, कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, या कुछ भी ऐसी न्यूज आ जाती है कि ये हो गया वो हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं और फिर गॉसिप करने लग जाते हैं, है ना। तो ये जो केस इसमें बताई है कि वन डायमेंशन के इसमें बेरी स्माइल इज हैविंग एन अफेयर विथ ट्रेलर स्लगिश, सो बेरी इज मैरिड टू कैरोलाइन स्मैक, ओके। तो बिल डजंट, ऐसे तो हम लोग भी देखते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसी बहुत सारी नंबर ऑफ फेक न्यूज आती है और फिर उसमें लीगल एक्शन ली जाती है, किया जाता है, या फिर उनके ऊपर चार्ज या पेनल्टीज क्रिएट होती है। तो ये सारी चीजें हमने ऑन द टाइम ऑफ पैंडेमिक में भी देखी थी कि गवर्नमेंट ने हमारा व्हाट्सएप और ये क्या कर दिया था, सबको वार्न कर दिया था कि कोई भी अगर फेक न्यूज अगर वगैरह ऐसा कोई सेंड करता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, और उन्होंने वो किया भी था, है ना। तो इसमें भी वैसा ही हुआ कि किसी ने कुछ मैसेज डाल दिया जो गलत था और फिर उसके एडवोकेट ने उसे सजेस्ट किया कि ये गलत मैसेज आपने फॉरवर्ड किया है तो प्लीज डिलीट दिस। सो कैन बिल बी लायबल फॉर द पोस्ट? द डिफेमेशन एक्ट 1996 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रेगुलेशंस, ठीक है। Protection key legislation and principles. So the data protection in 1998, 8 principles: fair and lawful processing, obtained only for one or more specified and lawful purpose. Lawful purpose होना चाहिए, legal purpose होना चाहिए उसके पीछे, educate, relevant and not excessive. आपको ये पता है ना कि लीगल थिंग्स से अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको ग्रो अच्छा मिलता है, बिकॉज यू फॉलो ऑल रूल्स एंड एथिक्स रिगार्डिंग दिस बिजनेस। और अगर आप रूल्स एंड एथिक्स नहीं फॉलो करोगे तो आपका नाम, रेपुटेशन, प्रोडक्ट, ये कुछ भी नहीं जाएगा। सो डू विथ रेगुलेशंस, लॉ, एथिक्स। सो एडिक्वेट, रिलेवेंट एंड नॉट एक्सेसिव, any kind of, so accurate and up to date होना चाहिए data, not kept for longer than necessary, proceed in accordance with data sub rights and appropriate security measures, not transferred outside the unless adequately protected। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स है, उसको निग्लेक्ट नहीं करना है और एकदम स्मूथली आपको एडिक्वेटली प्रोटेक्ट करना है। So regulated by Information Commissioner Office से ये ICO has the power to fine up to 25,000 for breach। मतलब आपने कुछ कमिट किया और उसको फुलफिल नहीं किया, बीच कर दिया किसी के साथ में, so the police officer who is has power to fine up to 25,000 for breach। मतलब 5 lakh, actually 5 lakh here यूरो दिया है यहाँ पे, so that is the fine। ये सारी चीजें देखने को मिलती ही है, वहाँ पे बहुत थोड़ा सा भी अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो आपको ऊपर एक्शन ली जाती है, immediate action they will take। Okay, next, data protection, cookies and consent to marketing। What it is? Privacy and E-commerce Regulations 2003, new rules on cookies। अभी भी हमें कुछ भी अगर हम गूगल पे या इसमें डालते हैं तो वो पहले पूछता है एक्सेप्ट द कुकीज, है ना, हमें, ताकि वो हमें और उसमें दिखा सके, राइट, अपडेट कर सके। सो दैट इज Privacy and E-commerce Regulations 2000, new rules on cookies in May 2011 पर से आया। Consent required to the set cookies, पहले आप उसको अलाउ करो कि यस आपको देखना है तो वो वही दिखाएगा जो आपको देखना है। Cookies
activities which are strictly necessarily add to basket, है ना, unnecessary जो ads और ये आते हैं verbals तो वो नहीं आना चाहिए. So must give clear and comprehensive information about fees. आप वहां पे सिलेक्ट करिए जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो only that kind of things you must watch. Consent to unsolicited email marketing. Opt to consent versus soft opt-in. Opt-in consent is required for email marketing unless email address obtained during course of sale negotiation for sale for goods services. Marketing relates to your similar goods and services. Recipient was provided with a means of refusing marketing when addresses. तो ये सारी चीजें कॉमन हो गई ईमेल एड्रेस, राइट. सो a number of things इम्पोर्टेंट है, मतलब कंसेंट रिक्वायर्ड है और उसके बगैर मैंडेटरी हो गई है. एक तरफ से हम लोग ऐसा बोलेंगे कि चीजें क्या हो गई है, मैंडेटरी हो गई है. तो मस्ट गिव अ मेथड टू अनसब्सक्राइब इन ईच कम्युनिकेशन चेन. हर चीज को सब्सक्राइब करो अगर कुछ भी देख जो भी आप चाहिए. तो अच्छी भी हो गई है, उसके डूज भी है, उसके डोंट्स भी है, बट एज पर योर बिजनेस रूल्स यू शुड गो लीगली, एथिक्स whatever जो भी है. So no one can take any actions against you, okay, because nowadays पहले तो मार्केटिंग पीपल को मार्केट में जाके एक एक कस्टमर को पकड़ना पड़ता था, बट ड्यू टू दिस पैंडेमिक अभी तो n नंबर ऑफ कस्टमर उनके ऑनलाइन हो गए हैं, है ना. ऑनलाइन चैट करना, ऑनलाइन उनको रिप्लाई देना, ऑनलाइन फिर तो थिंग इज गोइंग इजी, बहुत इजी हो गया है अभी कांटेक्ट करना. या फिर सिर्फ आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए. अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है जैसे टाटा हो गया या कोई भी ब्रांड है तो आप इजीली उसे बाय करते हो, क्योंकि टेस्ट है ना, एक बार हमें टेस्ट अच्छा लगा तो हम वो चीजें बार लेते हैं. अगर हमें पसंद आ गई तो हम वही चीजों को डिमांड करते हैं. सो रेगुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटरी पावर एक्ट 2000. सो क्रिमिनल ऑफेंस टू इंटरसेप्ट कम्युनिकेशंस इन द कोर्स of their transmission via postal, public or private telecommunication systems. So what it is? Exceptions: consent, lawful authority. So lawful business practice regulations authorizes specified interceptions, so carried out by person in the course of their business of purpose relevant to business, and they have used all reasonable efforts to inform of the interceptions. So you should know what is actually what practice you should follow for that. All business persons, especially a bigger person, for example Raymond, they don't need any kind of that because they are a brand, right? But as a Amazon, they don't do. पहले तो वो बहुत करता था, अभी नहीं. अभी तो उनको पता है कि n number of customers उसके हो गए, so they just means Amazon improve their quality every time. He just focus on quality and और service तो एक नंबर है उसका. Got it? So that is a lawful business practice. मतलब legal ethics के साथ, legal business के साथ they do each and everything. Got it now? So what data protection incoming this e-commerce? So what it is? Data protection regulations. So harmonies DP laws across EU, accepted to be in effect in 2016 at the earliest, and broader territorial effect, है ना. कुछ था मतलब misuse भी होता था, but they are fight it. So legal obligations on data processor, higher hurdle for consent, currently contains provisions for the right to forgotten, है ना. बहुत बार ऐसा हो जाता है भूलने की आदत, मतलब किसी का कुछ, बट अभी ये इसमें तो नहीं हो सकता डिजिटाइजेशन में, क्योंकि एवरी कंज्यूमर और कस्टमर चेक ईच एंड एवरीथिंग एंड देन दे सिलेक्ट द प्रोडक्ट एंड you will give them. So delete all data held about someone on request. No, the
take reasonable steps to inform third parties of the request. If he request, then थर्ड पार्टी के रिक्वेस्ट करने के बाद ही आप कर सकते हो. सो एक्सेप्शंस जो है रिसर्च, लीगल ऑब्लिगेशंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, बिगर फाइन्स अप टू 2% ऑफ एनुअल ग्लोबल टर्नओवर. तो वो सारी चीजें कितना है, क्या है टर्नओवर, इन नंबर ऑफ कंपनीज वी हैव सीन. तो आपको भी ट्रस्ट जो है ना, क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारे कलीग्स, हमारी फैमिली मेंबर्स, अदर पीपल आर वर्किंग देयर, सो वी ट्रस्ट. Now advertising. So committee of advertising practices, what it is code, enforced by advertising standards and authority. So what it is, advertising must be legal, decent, honest and truthful. एडवर्टाइज भी लीगल बेस पे ही होती है, आप कुछ भी नहीं दे सकते, ठीक है. अगर कुछ भी दिया तो एक्शन होगा. सो न्यू रूल्स ऑन ऑनलाइन बिहेवियरल एडवर्टाइजिंग. जो रूल्स है एडवर्टाइजिंग के, अगर आपको ऑनलाइन एडवर्टाइज करने हैं, सो यू शुड फॉलो द रूल्स ऑलवेज. ट्रूथफुल, लीगल, डिसेंट, ऑनेस्ट, ये सारे रूल्स जो है एकदम सिंपल ये दिखना चाहिए, है ना, ताकि लोग अट्रैक्ट हो. नाउ यूजफुल वेबसाइट. Which website you will be useful for that, so you can find more information on specific website. So this is the website, you have to check it and you will watch a number of things. So legislation.gov, intellectual property and data protections. So all these things अगर आप चेक करोगे, आप पढ़ोगे, तो आपको इसमें मिल जाएंगे कि क्या होता है, क्या परसेप्शंस है, कैसे चेक करना है, क्या लीगल थिंग्स है, क्या एथिक्स है, व्हाट थिंग्स यू शुड फॉलो फॉर दैट, एवरीथिंग यू विल गेट देयर. देन डिस्टेंस सेलिंग कैसे है, एडवर्टाइजिंग क्या है, कंज्यूमर लॉ क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी. गॉट इट. सो ये था सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पार्ट. इसके आगे भी बहुत है, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे. एनीवन वांट टू एनी क्वेश्चन, या किसी को कुछ है डाउट कि कॉमर्स से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड? नॉट चैप्टर, इट्स अ पार्ट ऑफ सेकेंड यूनिट. सो प्लीज टेल अस. या पढ़ाते वक्त अगर आपको स्पीड लग रहा है कि नहीं मैम बहुत स्पीड से पढ़ा रही है, तो प्लीज रिप्लाई अस. मैं और स्लो पढ़ाऊंगी, आप कुछ आंसर ही नहीं देते हो. फर्स्ट थिंग इज दैट. Yes, anyone want to ask any questions? Am I audible to all of you? Understand what we learned today? Yes or no? Yes, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so see you tomorrow, sorry, day after tomorrow. Okay.